Nagaland District Administration Employees Association announced its participation in a statewide three-day bend-down strike. Employees of the Nagaland Secretariat Service Association have begun a peaceful bend-down strike demanding transparency and meritocracy in the ongoing IAS induction. 67-year-old retired psychotherapist was brutally murdered at her home in Impal West, Manipur after being attacked with a blunt object. In Jharkhand's Hazaribagh, man was arrested for murdering his wife, Sivanti Kumari, just 4 months after their marriage. 5 moneylenders were arrested in Gurugram for extortion after illegally demanding Rs 25 lakh from a poor borrower. Good evening, viewers. This is Marinikitan and you're watching English Primetime. Now the news in details. The Nagaland District Administration Employees Association announced its participation in a statewide three-day bend-down strike from October 14 to 16, protesting the inclusion of a non-NBC candidate in the IAS induction list. The NTAE directed district units to follow protocols and ensure peaceful observance. Employees of the Nagaland Secretariat Service Association have begun a peaceful bend-down strike demanding transparency and meritocracy in the ongoing IAS induction, protesting alleged irregularities and backdoor entries, and urging strict adherence to IAS recruitment rules to ensure fairness and accountability. A farewell program was held at Rajpawan, Kohima, honoring Sri Momotongoy, outgoing Joint Secretary to the Governor of Nagaland, where colleagues praised his dedication, professionalism and service, wishing him well for the future in a warm, appreciative gathering. In the 9th Annual Conference of Northeast India Commerce and Management Association at Tinsukia Commerce College, Tinsukia held during 10th and 11th October, Ms. Tosen Liu and Mr. Haidonglo Kat stood second in the paper presentation competition. They received cash prize, memento and certificates. The research paper was supervised by Dr. Trubai Joy Brodoloy of the Department of Management. The conference was also attended by Dr. Tidalak Bame, Dr. Mani R. and Dr. Kelezale Kovir, Nagaland University, Kohima campus. Lieutenant General Vikas Lakera toured the IGSM Rifles North Headquarters on 13 October, reviewing operational readiness, the security landscape and troop welfare, and later praised the ranks at a special Sainik summit for their professionalism and peacekeeping efforts. Nagaland CM Nefirio made former CM and NBF President Dr. Shorozele Lezite to seek support and blessings amid growing speculation of political realignments and party members in the state ahead of upcoming developments. The Nagaland Cricket Association announced its squad for the Vinno Mangkat Trophy 2025-26, expressing confidence in the young players' skill and determination. The tournament offers under-19 cricketers valuable national exposure, and the NCA wished the team success in representing Nagaland with pride and sportsmanship. St. Joseph University Placement Cell, in collaboration with the Indian Navy, held a career guidance program titled A Career Choice in the Indian Navy on October 14 to inform and motivate students about naval career opportunities. Naval officers discussed entry schemes, training, career growth, and life in the Navy, followed by question and answer session. The university thanked the Navy for the initiative and reaffirmed its commitment to guiding students towards service-oriented careers.
Baso public organizations urge 57th Donokyo MLA to urgently repair the Baso headquarters. Noglak Road, citing its poor condition, disrupts emergency transport, supplies and daily travel, risking commuter safety. They demanded repairs within October 2025 to restore safe connectivity and ease residents' hardship. The Assam Rifles organized a vibrant road show and bike rally in Paketown to generate excitement for the upcoming 9th Captain Kangruse Memorial Football Tournament. The tournament is held in memory of Captain Kangruse, NVC, a brave soldier renowned for his exceptional courage and leadership during the Kargil War. His valiant actions earned him the Mahavir Chakra posthumously, and his legacy continues to inspire the youth of Nagaland. The event saw enthusiastic participation from locals, including a teamwork from PIC that will be competing in the tournament. The Naga Council, Timabur, and allied civil society groups expressed concern over the Nagaland Liquid Total Prohibition Act 1989, citing its failure after 36 years as liquor remains widely available and drug abuse rises in Timabur. They clarified the neutral stance toward the charge and government, but called for a review or lifting of the act to improve public safety. The UCCF President and NCD will co-lead efforts to appeal for this review. Now we'll have a report from reporting Moilampom. And then Aji Amar Naga Council Dimapur, under the Naga Council aegis, the UCCF President, he is the convener of the Nltv, Aro Naga Council, aegis Tiase, Dimapur Naga Students Union B, and then Naga Naga Women Hoho, and then Dimapur Gombra Union Association, Sadar, GB Union Sadar Dimapur, and Dimapur Naga Students under Naga Council aegis, and the Aro Tati Amiken Nltv Act Amiken ito aji first laga kutha nohoy, aji starting laga kutha nohoy, like governor thaka humoy de amar President DUCCF jasi hi convener kona last time bitai pura hati pisi kam to progress kori na hise Nagaland State Assembly TV discussion korise hole bi aji government to implement no korai karone ami ken aro itu aji all the civil societies in Dimapur district jiman civil society ase itu matise aji bhal pra meeting luise sob house agree ase itu Dimapur di Nltv laga issue to hatai dibo lage kogina ami ken pehla 2023 pra ami ken start kori na assembly tv talk korise itia to governor june to logo lu paise chief secretary chief minister logo amar president DUCCF is the council of the Naga Council also tai spearhead kori gena Aji ami ken iman ta kitab to banai gena Nagaland government ki dise all the civil societies, all the organization local government ke then the head of the department government ki kun ki dibola se dis Aji ami ken kile aru to meeting loi gena to karni kotha kore ase koile especially ami ken Dimapur district to Nltv to hatai dibo lage 1989 pra aji logo ha 36 years running now itu ban kora to ki laka achievement aji dikhi paise since 36 years ban kora dia dry stay kori dia aji logo eko progress ami ken dikhi pai na Nagaland but I'm not talking about Nagaland I'm talking about Dimapur apni ke sub jani everywhere aro amar Dimapur di amar DUCCF chairman he is a councillor Naga Council 97 government recognized colony are here in Dimapur every colony di mudu payas
বিকাই আছে, খাই আছে, ভালটো নাপায়। 10-15 years পিছতে মৰি যায়। পলিটিটো ভাল নাপায়, বিয়া খাই কেনে এইটো মৰি যায় আছে। দাৱাই ড্ৰাগছটো ডে বাই ডে ইনক্ৰিজ হৈ আছে ড্ৰাগছ খাই কেনে। আমি সেই মদুটো বন্ধ কৰি আছে কয়, কৰিলে টোটেলি বেন কৰি দিব লাগে। আজি আমাৰ নাগা কাউন্সিল ডিমাপুৰ Indian Railways has launched its first ever freight train services from Mizoram by Rabi to Serang Line and Nagaland's Molvam station in September, marking a major boost for Northeast India connectivity, trade efficiency and economic growth by improving logistics, reducing cost and enhancing market access for local industries and farmers. A special memorial program will be held on October 19 at Kamar Kuchi Sonabur, marking 1 month since the passing of Assam's beloved singer Zubin Garg. Thousands of admirers are expected to gather at his cremation site to pay tribute. Around 2,000 devotees will sing hymns, while over 100 flute players will be performed in his memory. The evening will feature a traditional bauna to honor his artistic and spiritual legacy. A 14-month-old girl was allegedly raped and murdered in North Tripura's Banisakar. Police say the toddler's grandfather, a Delhi waiter, lured her on an outing, buried her body in a paddy field, and has been arrested from Karimganj, Assam, with an investigation underway. परसों पानीसागर पीएस के अंदर एक बहुत ही दुखदायक घटना हुई थी, जिसमें एक अक्यूज्ड है जैनालुद्दीन। वो एक छोटी बच्ची है 14 महीने की, उसके दादा लगते हैं। वो उनको बाहर लेके गए थे घुमाने के लिए शाम को मम्मी से लेके, और वहाँ से जब वापस नहीं आए तो लोगों ने उनको ढूंढना स्टार्ट किया, और पुलिस को भी रात में इन्फॉर्म किया गया कि उनके दादा और बच्ची मिल नहीं रही है। जब वापस ढूंढते ढूंढते हमें एक ग्राउंड में फ्रेश मिट्टी मिला। जब उस मिट्टी को देखा गया, उसको देखा गया तो उसमें बच्ची की बॉडी मिली। तो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जैनालुद्दीन ने उनको मारा था, और उनके सस्पेक्टेड रेप का भी केस लग रहा है। फिर उसके बाद पुलिस ने तुरंत ही बहुत सारी टीम बनाई, नाके अलर्ट किया, और जैनालुद्दीन को हमने नीलम बाजार करीमगंज से अरेस्ट करके लेके आए। उनका आज प्रोडक्शन भी है, और उनके खिलाफ केस लिया गया है BNS की धारा 65/2, 66 और 103 मर्डर 238। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 भी लगा। The Brahmota founder Brajot Kichor Debarma has hinted at forming a unified regional political front of indigenous parties across the Northeast. Speaking at a mass training event in Akardala, where over 1,200 people, mostly former BJP supporters, joined the Brahmota, Debarma said efforts are underway to bring together tribal parties from Manipur, Meghalaya, Nagaland and Assam. He urged tribal communities to move beyond individual identities and unite under one platform, signaling growing tensions within the BJP Brahmota alliance in Tripura. The move comes amid reported delays in implementing the tripartite agreement signed last year between the center, state and the Brahmota. Attempt will be much better than any other attempts before. We are all we are divided as Hindus, Christians, Buddhists. But when we go out of Northeast, nobody knows whether you're a Meitei or a Kuki. Nobody knows whether you're a Ahom or you're a Bodo or a Dimasa or a Karbi or a Riang or a Jamati or a Deb Burma or a Mizo, right? But when we go outside, because we are divided, people take advantage of us, exploit us, and because we have been divided, all our lands which have gas, oil, petrol, tea gardens, cement, uranium, we are exploited. So I think the time has come where we don't think as Khasi, Karus and Jaintiyas, Bodos, Dimasas, Tiprasas. We come together and we speak in one voice for one Northeast. Northeast needs also a voice which speaks in a singular way, and I think that we should all get together and do so. Very good response. The people want it, and if the people want it, the leaders will have to listen to the will of the people. Attempt will be much better than any other attempts before.
A 67-year-old retired physiotherapist Dr. Ashem Rida was brutally murdered at her home in Imphal West, Manipur after being attacked with a blunt object. Police are investigating the case while the local community demands swift action to apprehend the culprits. Viewers, now we'll take a short break. Welcome back, viewers. You are watching English Primetime. Santosh Mishra from Sachai village in Bihar's Arawal was shot dead during a morning walk on Tuesday. His son alleged that Mishra was killed by relatives amid a family feud. Five moneylenders were arrested in Gurugram for extortion after illegally demanding rupees 25 lakh from a borrower who had taken a rupees 7 lakh loan at 20% interest, having already repaid rupees 15 lakh. The accused, including Krishan alias Nitin and others from Rohtak, faced charges following an FIR at Shivaji Nagar police station. इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की टीम को एक व्यक्ति के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी और उनके द्वारा अपनी कंप्लेंट में बताया गया था कि अगस्त 2024 में करीब 5-6 लोगों से उसने 7 लाख रुपए उधार लिए थे, जो इन लोगों के द्वारा इस उधार लिए गए पैसे की एवज में 7 लाख जो उसने लिए थे उससे 15 लाख रुपए अभी तक वसूल किए जा चुके थे और फिलहाल भी उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और जबरदस्ती उसके ऊपर और दबाव बनाया जा रहा था कि वो 25 लाख रुपए इनको और पे करे। तो इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी संबंधित सेक्शंस में। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद कुल मिलाकर के 5 अक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए जो अक्यूज हैं उनमें से सबसे पहले जो अक्यूज है वो कृष्ण है और वो रोहतक के अजीत कॉलोनी का रहने वाला है। बाकी जो 4 अक्यूज हैं ये रोहतक के कबूलपुर गाँव के रेजिडेंट हैं, जो इनकी पहचान हिमांशु, संजय, प्रवीण और ललित के रूप में हुई है। इन सभी 5 अक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की टीम The BJP released its first list of 71 candidates for the Bihar Assembly election, scheduled for November 6 and 11, with counting on November 14. Key leaders like BM Modi and Amit Shah attended the Central Election Committee meeting that approved candidates including Mankal Pandey, Takeshwari Prasad, and Deputy CM Vijay Kumar Sinha and Samrat Chowdhury. The NDA faces the India bloc led by Dajeshwar Yadav and new entrant Jan Suraj led by Prashant Kishore. In Jharkhand, Hazaribagh, Mukesh Kumar Mehta was arrested for murdering his wife, Sevanti Kumari, just 4 months after their marriage, staging it as a road accident to claim insurance money. Police grew suspicious after his behavior at the funeral and inconsistencies in the accident, leading to his confession of beating and strangling her before faking the mishap. He was taken into judicial custody. दमा से भद्रकाली जाने वाले रोड पे लाठी के नज़दीक एक एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस वहां जांच करने के लिए गई तो वहां पे दिखा कि एक महिला वहां पे मृत पड़ी हुई है, एक पुरुष बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है
और दोनों को पुलिस और उठा करके इसको जांच के लिए हम लोग भेजे हॉस्पिटल, जहाँ पे सदर हॉस्पिटल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया और जो लड़का था, लड़के ने अपना वहाँ से रेफ़र करा के आरोग्य में अपना इलाज कराया। बाद में लड़का फिट होकर के अपने घर आया और जब उसका क्रियाकर्म लड़की का चलने लगा, इस पीरियड में तीसरे दिन जब उसकी जांच किया, वहाँ पे लोगों ने देखा तो बताया कि इसके तो कहीं बॉडी पे कोई खरोंच तक नहीं है, जबकि लड़के द्वारा बताया जाता था कि एक्सीडेंट के में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो लोगों ने वहाँ पे जांच किया, उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब वहाँ पे गई, पुलिस में भी प्रथम दृष्टया वैसा ही सही पाया। फिर हम लोगों ने इस पे आकर अनुसंधान प्रारंभ किया है और वर्तमान में हम लोगों ने उसको अभी थाना में पूछताछ हेतु लाया और हम लोगों ने जब सर्च किया तो वास्तव में उसके बॉडी पे कहीं भी, लड़के के जो मुकेश कुमार मेहता है, उसके बॉडी पे कहीं भी कोई भी खरोंच के दाग नहीं थे। यहाँ तक कि उसके जो जिस बाइक को दुर्घटना कारित होना बताया जाता है, उसके बाइक का भी हम लोगों ने गहनतापूर्वक निरीक्षण किया है, लेकिन किसी भी जगह कोई भी खरोंच बाइक में भी नहीं है। साथ ही साथ ये अपना एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो अपना हेलमेट था उसको झाड़ी में फेंक दिया था, छुपा दिया था। फिर हम लोगों ने उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने हेलमेट से मार करके और उसको जब बेहोश हो गई तो फिर एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके गला को दाब करके मार दिया हूँ। इसके बाद हम लोग बोले कि हेलमेट कहाँ है, तो हेलमेट के संबंध में उसने बताया कि हम वहाँ छुपा के रखे हैं, वहाँ ले जा करके हम उसको रिकवर करा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हेलमेट रिकवर किया और हेलमेट में कहीं भी कोई खरोंच नहीं है, ना हेलमेट का सामने का शीशा कहीं टूटा या कोई भी ऐसा देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वो दुर्घटना हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने उसके कपड़े को खोल करके और पूरा उसके बॉडी का सर्च किया है। वास्तव में कहीं कोई उस पर कोई खरोंच नहीं है। और जब हम लोगों ने और अनुसंधान से प्रारंभ किया तो पता चला कि इसका जो है, और कुछ दिन पहले इसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था LIC में, और बीमा को क्लेम करने के लिए ही प्री प्लान के तहत बीमा कराया गया था और प्री प्लान के तहत अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है, ताकि बीमा को क्लेम करके वो उस पैसे को अपने लाभ के लिए। बीमा से भद्रकाली जाने वाले रोड पे लाठी के नज़दीक एक एक्सीडेंट की सूचना पुलिस। West Bengal police took the 5 accused and the survivor fleeing to the Durgapur crime scene for a reconstruction as part of the investigation into the alleged gang rape of a medical college student. The police also searched 2 accused homes, seizing clothes linked to the crime and sent mobile phones for forensic tests. The accused include a former security guard, a hospital worker, a temporary civic worker, and an unemployed person. The survivor, a second-year student from Odisha, was attacked outside the college after going out for dinner. A mega health camp was held at Biswanath Commerce College, providing free checkups and treatment for over 50 diseases, focusing on children and adolescents under 18. Inaugurated by MLA Pramod Prodokar, the camp expects to treat nearly 4,000 patients, with key officials like Deputy Commissioner Simant Kumar Das and Joint Director Dr. Yochen Chandra be in attendance. নমস্কাৰ, মই প্ৰথমে জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই স্বাস্থ্য মেলাটোৰ বাবে। এইটো এটা সমষ্টি ভিত্তিক এইটো স্বাস্থ্য মেলা। মই ভাবিছোঁ প্ৰায় 4,000 মান 18 বছৰ তলৰ শিশুসকল আহিব আৰু ইয়াত বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰসকল আছে, তেখেতসকলক পৰীক্ষা কৰিব আৰু ইয়াতে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায় ইয়াতে কৰিব, যিখিনি গুৱাহাটীলৈ পঠাব লাগে গুৱাহাটীলৈ পঠাব আৰু গুৱাহাটীৰ উপৰিও কিছুমান বিশেষ ৰোগীক হয়তো আমি বাহিৰলৈ পঠাব লগা হয়, দিল্লী, মুম্বাই, বাংগালোৰলৈ পঠিয়াব লগা হ'ব পাৰে আৰু চৰকাৰীভাৱে বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰে সেই শিশুসকলক সেই স্থানলৈ লৈ যাব। মই ভাবিছোঁ এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা, মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। দ্বিতীয়তে, যি কিছুমান বিকলাংগ শিশু মানে ডিসএবল শিশুসকলৰ বহুতৰ চাৰ্টিফিকেট নাই, ইয়াতে অহাৰ পিছত তেখেতসকলে স্ক্ৰিনিং কৰিব, স্ক্ৰিনিং কৰাৰ পিছত সেই চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাৰ এটা সত্য শুদ্ধ তথ্য থাকিব যে প্ৰতিটো সমষ্টিত এনেধৰণৰ শিশু কেনেকুৱা আছে
হয়তো ভৱিষ্যতেও চৰকাৰে বেলেগ আঁচনি ল'ব পাৰে এই শিশুসকলক চিকিৎসাৰ বাবে। খুব ভাল ব্যৱস্থা, মই সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি দিনটো সন্ধিয়ালৈকে চলি থাকিব, আজি শেষ কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে কমপ্লিট টিম, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, অল আদাৰ অফিচাৰ্ছ সকলো ইয়াত ইনভলভ হৈ আছে। থেংক ইউ। The Supreme Court on Tuesday directed former Telangana Special Intelligence Bureau Chief T. Pradhakar Rao, accused in the phone tapping case, to submit his iCloud password to state police in the presence of forensic experts. Rao's lawyer, T.S. Naidu, denied the claims and called the politically motivated, also alleging interference by politicians during interrogation, a claim the court criticized. The case will be heard next on November 18. Palestinian ambassador to India Abdullah Abu Sawish called the recent hostage release under the Gaza ceasefire a threshold in history, offering renewed hope for peace after years of suffering. He acknowledged the drama of both Israeli hostage and the 11,000 Palestinian prisoners in Israeli jails. While welcoming U.S. President Donald Trump push for peace, he urged global action for a two-state solution and criticized the international community's hypocrisy in trading with Israel while condemning the actions. Which we prayed for year after year, and 7 years ago it was you, President Trump, that in the name of the United States you recognized Jerusalem as the capital of Jerusalem. You executed a promise that many other presidents promised. You transferred the Google Cloud CEO Thomas Kurian announced that Visakhapatnam will become a major global connectivity hub as the company sets up its largest AI hub outside the US in partnership with the Adani Group. The tech giant will invest $15 billion over 5 years to develop a 1 gigawatt data center campus, large-scale energy infrastructure, and enhance fiber optic connectivity. Google CEO Sundar Pichai called it a landmark development that will boost AI innovation and digital growth across India. We're very pleased to announce a new gigawatt scale AI hub in Visakhapatnam. It's the largest AI hub that we are going to be investing in anywhere in the world outside of the US. It represents a capital investment over the next 5 years of $15 billion. And will scale to multiple gigawatts. It is a part of a global network of AI centers in 12 different countries, but it is, as I said, the largest one that we will be building anywhere in the world outside the US. We will be making Visakhapatnam a Delhi Congress Chief Devendra Yadav and 55 others were detained by police in Najafarkar while protesting against alleged vote theft without permission. The Congress vowed to continue raising their voices by the detentions. Earlier, Rahul Gandhi accused BJP and Election Commission of huge criminal fraud in polls, urging action of faulty voter rolls, but election officials demanded details to proceed. In New Delhi, Prime Minister Narendra Modi met Mongolian President Kurilik Sok-Ugna to strengthen India and Mongolian ties, signing MOUs across sectors like heritage restoration, digital cooperation, and immigration. They released commemorative stamps marking 70 years of relations, with India offering free e-visas and cultural exchange programs. The visit reflects a shared commitment to deepen strategic, cultural, and development partnership. एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है और 2500 से भी अधिक भारतीय
अपने मंगोलिया के साथियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को साकार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे सहयोग को हमने आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईटी और भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल के माध्यम से मंगोलिया के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी गहरी मित्रता की मिसाल है। साथ ही आज हम इस कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने जा रहे हैं तो सामान्य मानवीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। 1 मिलियन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट को भी शीघ्र से ही शुरू करने का निर्णय लिया है। मंगोलिया में बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है और आज हमने तय किया है कि नालंदा और गंदन मोनेस्ट्री को साथ जोड़कर हम इस ऐतिहासिक संबंधों में एक नई ऊर्जा लाएंगे। हमारे संबंध केवल केंद्र सरकारों तक सीमित नहीं है। आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और मंगोलिया के आरखांगाई प्रोविंस के बीच हुए एमओयू से हमारे सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, हमारी सरहदें भले ही जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से India has added about 4.9 gigawatt of residential rooftop solar capacity under the Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana with over 57.9 lakh applications submitted by July 2025, but only 13.1% of the 1 crore installation target and 14.1% of the rupees 65,700 crore subsidy have been realized, posing challenges to the fiscal year 2027 call of 30 gigawatt. Gujarat leads in capacity, followed by Maharashtra, UP, Kerala and Rajasthan, while fragmented supply chains and limited grievance redressal hinder progress. A teacher at Jivantip Education Center in Munirka has been arrested for allegedly beating a student for not completing holiday homework. The incident came to light after the boy's mother, Bingi Chowdhury, noticed bruises on him and spoke out. "My son said the teacher beat him and warned him not to tell anyone," Bingi said, urging authorities to ensure no child faces such treatment. The student confirmed the incident, saying he was punished for missing homework during his leave. The accused, Anand Kumar, was arrested on Saturday. Police have registered a case and are investigating. पिंकी चौधरी। पिंकी जी, आपके बेटे के साथ में क्या हुआ था और उसने क्या शिकायत की आज? सर, उस दिन इसने हमसे कुछ नहीं बताया। ये आके मैंने बोला कि कार्तिक खाना खा लो, ये रूम के अंदर चला गया कि मम्मा मैं ना आज थक गया हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ के, तो मैं सो जाता हूँ। मैंने सोचा कि कार्तिक दूध तो पी ले, तो बोला नहीं मम्मा मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की भूख नहीं। इसने मतलब कपड़ा लिया और मुँह ढक के लेट गया। तो इसके पापा बोले कि शायद थका हुआ है तो कोई नहीं, सो जाने दे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, सो गया। फिर ये सुबह उठा तो सर इसके ना यहाँ पे मैंने देखा कि रिंग का निशान था यहाँ पे, बिल्कुल आँख के यहाँ पे। मैंने बोला कि कार्तिक क्या हुआ, यहाँ पे ये निशान किस चीज़ का है? तभी एकदम रो पड़ा मेरी कोली भर के। तो तब बोला कि मम्मा वो सर ने मारा है मुझे और सर ने मना किया आप सर से मत बोलना। तो फिर मतलब इतना मारने के बाद फिर उन्होंने
Umesh Yadav and his family fabricated a kidnapping story to falsely accuse people from a rival group amid a land dispute. His wife Sharda Devi had reported to police that Umesh was kidnapped by 4 unknown men on his way to the market. A special police team tracked Umesh to a relative home in Jamui district using mobile location and surveillance. Under questioning, Umesh admitted the kidnapping was staged by his family and retaliation against neighbors. जो है वो मोदी नगर में छेना का दुकान मतलब बेचने जाता था वहाँ पे, वहाँ से गायब हो गया। तो मामला थोड़ा सा गंभीर था, तो हम लोग SIT टीम गठित किए और DIO भी थे और वहाँ के हंसी का थाना अध्यक्ष भी थे। काफ़ी हम लोग वैज्ञानिक तरीका से खोजबीन करना शुरू किए और तो उन्होंने एक और हिंट्स दिया था कि कुछ गोतिया है, इसका भी नाम किया था, जो उसके साथ कुछ जमीनी विवाद चल रही थी और आशंका व्यक्त किया गया था कुछ के द्वारा ही अपहरण किया गया था। तो हम लोग हर पहलू पर जांच किया गया और वैज्ञानिक तरीके से हम लोग जांच करके ये पता चला कि उन लोग फॉल्स अपहरण का केस करवाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है अपने चारों के यहाँ छिपा हुआ था। A 50-meter stretch of road on the outskirts of Pawal, Madhya Pradesh, gave in on Monday morning. Craig's refused notice around 11:30 a.m. Police quickly barricaded the area and diverted traffic to prevent accidents. The road, built by the Madhya Pradesh Road Development Corporation, is now under urgent repair. 11:30 पौने 12 बजे यहाँ पे दरार निकल आई थी। तो जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हमने जो चौराहे है वहाँ से सारी गाड़ियाँ रुकवा दी थी और वहाँ बैरिकेटिंग करके डाइवर्ट कर दिया दूसरी लाइन पे और ये अभी यहाँ पे बैरिकेटिंग करवा रहा है हम। उससे पहले हम लोगों ने बैरिकेटिंग कर दी थी दरार का, जैसे ही पता चला उसके बाद ये बढ़ी। अभी पहले सिर्फ दरार थी, उसके बाद अभी ये काफ़ी धसक गया रोड। सूचना दे दी है, उस MPRDC मैडम को सूचना दी है, वो आ भी गए, सब लोग आ गए हैं और बैरिकेटिंग करा रहा है। MPRDC से आ गए सब लोग। मोटरसाइकिल से आ रहे थे, सीधा ये रोड हमारे सामने धसा है पूरा। अचानक दरदरा गया, पुलिस को बुलवाया, रोड वो बंद पूरा मैंने किया। इसी रास्ते से निकल रहा था तो देखा किस लिए ट्रैफिक लगा हुआ है, गाड़ी रोक के मैं उधर खड़ी करके देखने को आया तो ये रोड धसा हुआ है। ये शासन प्रशासन और पार्टी दल के नेताओं से कहना है एक बार आकर सब देखें और ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। Bibin Joshi, a 24-year-old Nepali student taken hostage by Hamas in October 2023 during an attack in Israel, has died in custody. His family had been actively lobbying for his release and were recently at Hostage Square in Tel Aviv. Egyptian President El-Sisi called US President Trump made his peace plan the last chance for peace at the global summit in Sharm el-Sheikh supporting the Gaza ceasefire. The summit focused on rebuilding Gaza and a two-state solution, with key regional leaders attending, while major challenges like disarming Hamas and Gaza's reconstruction remain as Israel and Hamas continue without direct talks. Excellency President, let Gaza war be the last of wars in the Middle East. Majesties, Excellencies and Highnesses, Egypt launched a peace trajectory in the Middle East nearly half a century ago, specifically in November 1977. When the late President Anwar Sadat, may God shower him with his mercy, took unprecedented steady moves in the history of the region and initiated the historic visit to Jerusalem. Since that moment, Egypt has established a new era, granting posterities a chance for life, and proved that people's security is not only realized by military force. Today, Egypt along with its sisterly Arab and Islamic states, reiterate that peace remains our strategic option. Experience showed over the past decades that this option cannot be founded except through just and equal rights. Based on this, and if the whole regional populations have always been relishing the right. India.
At the Middle East Peace Summit, US President Donald Trump praised India as a great country led by a good friend without naming PM Modi, expressed optimism about India and Pakistan relations, and was lauded by Pakistan BM Shehbaz Sharif, who nominated Trump for the Nobel Peace Prize for his role in ceasefire and peace effort. Through India, critics direct military talks for halting hostilities after Operation Sindoor and cross-border strikes in May. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but my dear President Trump, my dear brother President Fadil Sisi of Egypt, Majesties, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. Well, I would say today is one of the greatest days in contemporary history, because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. जिन्होंने भारत की BJP leader Nishikant Dubey condemned Pakistan at the UNGA for violating the UN's children and armed conflict agenda by targeting schools and children in Afghanistan and India, accusing Pakistan of cross-border terrorism and hypocrisy while highlighting India's effort to protect child rights and its retaliatory strikes on terror camps during Operation Sindoor. उन्होंने भारत की महत्ता को स्वीकारा है। दूसरी ओर पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो CAA एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि CAA पर महासचिव द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट और साथ साथ चल रहे सीमा पार आतंकवाद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी सीमाओं से परे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा स्कूलों, विशेषकर बालिका विद्यालयों में स्वास्थ्य कर्मियों पर किए हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और अफगानिस्तान सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए। इस Joel Mokyr, Philip Byakuan and Peter Howitt won the Nobel Memorial Prize in Economics for their research on creative destruction, explaining how innovation drives economic growth by replacing older technologies. Mokyr focuses on historical trends, while Byakuan and Howitt use mathematical models, with their work emphasizing the importance of sustaining innovation to avoid economic stagnation. Former US President Donald Trump has once again praised Turkish President Recep Tayyip Erdogan, calling him a strong leader during a recent event. "I get along with the tough ones, I don't get along with the weak ones," Trump said, referencing Erdogan. Trump has previously expressed admiration from leaders like Erdogan, Vladimir Putin and Kim Jong-un, a pattern that continues to spark debate over his foreign policy views and preference for authoritarian-style leadership. Along with the tough ones,
I don't get along with the weak ones. I get along with the tough ones. I don't know what that is, but Erdogan's been great with me. You know, when NATO has a problem with Erdogan, which they often do, they call me to talk to him. And I've never failed in working it out like immediately. Is that right? I get along with the tough. That's all for today's English Primetime.